दलों के जनप्रतिनिधियों को आपका अमूल्य मार्गदर्शन मिलता रहे। आपके ज्ञान और अनुभव का लाभ संपूर्ण देश को मिले, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं आशा करता हूं कि आपके एक लंबे सामाजिक राजनीतिक जीवन का लाभ आगे भी इसी तरीके से देश को मिलता रहेगा। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला का शुक्रिया अदा करता हूं। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू के प्रति विदाई उद्गार व्यक्त करने के लिए मैं माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी को आमंत्रित करता हूं। May I now request Honorable Deputy Chairman Shri Harivansh ji to deliver the farewell address and present the same to the Honorable Chairman Shri Harivansh ji. Honorable Chairman, we, the members of Rajya Sabha, have assembled here to bid you farewell on the eve of your demitting the august office of the Chairman. Rajya Sabha, a constitutional office which you have held for 5 years with great distinction and dignity. You have had the rare distinction of being the first sitting member of this august House to become the Chairman of Rajya Sabha. Sir, with a heavy heart, we bid you farewell. Sir, your life is an inspiration for the common man. A humble farmer's son, you would overcome challenging circumstances and rise to the exalted position of the Vice President of India and the Chairman Rajya Sabha. From a student leader in the university to the present, you have traversed a long journey in public life of over 5 decades, achieving significant milestones as a firebrand student leader, veteran parliamentarian, astute organizer, able administrator, and above all, as the country's thought leader, performing the constitutionally ordained role of the Vice President and Chairman Rajya Sabha. Sir, your journey in public life bears testimony to your steadfast commitment and tireless work for the cause of the poor and the deprived sections of the society. Sir, inspired by the ideals of total revolution of Lok Nayak Jayaprakash Narayan, you plunged into the arduous task of nation building and elevated every position you held in the party, in the government, and also in the constitutional setup. The issues concerning the welfare of the people, Antyodaya, have remained close to your heart. Sir, you left an indelible mark in the various responsibilities you discharged as a union minister. You have always remained an idea man, sir, infusing new ideas into the country's development agenda. Not surprisingly, you discharge responsibilities of both the ministries of rural development and also urban development, though in different dispensations. As the Minister of Rural Development, you pioneered several reforms in rural development, which included the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, a flagship scheme that remains at the core of rural connectivity revolutions even today. You spearheaded the government's key initiatives on a smart city, Swachh Bharat, and comprehensive action plans for urban infrastructure development as a Minister of Urban Development. Your parliamentary knowledge and experience and your bipartisan relations across political spectrum made you the natural choice for handling the Ministry of Parliamentary Affairs. In that capacity, you played a pivotal role in building bridges of understanding between the Treasury and opposition benches on issues of national importance. Building consensus on important legislations had been your strength
which came to the fore on several occasions. In particular, during the passage of the GST bill that had sharpened the political divide of the time. Sir, you have had a distinguished legislative career spanning nearly 3 decades, serving as a member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly for 2 terms and as a member of the Rajya Sabha consequently for 4 terms. You have been in the treasury benches as well as in the opposition. In your different capacities as the chairman, Parliamentary Committee on Petitions and Committee on Home Affairs, and also as a member, you effectively use the forums of the legislature to forcefully articulate the concerns of the common man. Your vast parliamentary experience, deep understanding of and fastidious attention to the rules and procedures were deeply reflected in the remarkable way you conducted the proceedings of the House. You have always endeavored to conduct the business of the House through a fair and impartial application and interpretation of rules, conventions, practices, and precedents. We applaud you for performing your role as chairman, Rajya Sabha, with sheer grace and excellence. Sir, true to your commitment to healthy parliamentary tradition, you developed a 3D roadmap: discuss, debate, and decide for conducting the business of the House. The deliberative role of the Rajya Sabha and its members was always uppermost in your mind. To this end, you never allowed procedures to be compromised in any form, and on several occasions, you strictly enforced the laid down rules to ensure the quality of debate and productivity of the House. Your uncompromising approach made you appear a hard taskmaster, sir, but it was all in the larger interest of the institution. We all know too well that you were a leader with hard exterior and soft interior. On numerous occasions, you have shown your sensitive side as you become emotional when frequent disruptions took toll of the proceedings of the House, tarnishing the image of the Rajya Sabha in the eyes of the public. We vividly recall your sane advice on the occasion of assumptions of office of Chairman Rajya Sabha when you said, sir, I quote, "Our democratic polity allows cherishing of different ideas and thoughts on a range of socio-economic issues, but adversarial politics should not be allowed to have adverse impact on the functioning of Parliament, which in turn impacts the progress of our nation." All throughout your tenure, you missed no opportunity to remind us of our duty as public representatives and implored us to work together for nation building. Because of your earnest efforts, the House recorded substantial progress in its productivity and perceptible increase in the participation of the members both in the House and in the committees. As a chairman of Rajya Sabha, you presented a report to the people on the working of Rajya Sabha during 2014-19, a first of its kind initiative to make the Rajya Sabha a truly reflective chamber to mirror people's aspiration. Sir, you have all along been a people's leader. Your close bonding with the people remained alive even after you became the country's vice president. Despite being engrossed with the responsibilities of your high office, you tirelessly traversed the length and breadth of the country and reached out to a cross-section of people, especially the youth, women, farmers, scientists, and doctors. Your untiring zeal in remaining connected with the masses has been the hallmark of your leadership. A strong votary of preserving and promoting the Indian languages, you encouraged us to speak in our mother tongue in the House. Through your public exposition, you also endeavored to sensitize the teachers and also the students about the natural advantages of learning in mother tongue. You yourself have been a polyglot with a distinct
command over several Indian languages. Because of your advocacy and support, members can now speak in the House in any of the 22 scheduled languages with simultaneous interpretation in English. As an immaculate wordsmith, you have often added a dash of humor when tensions ran high by weaving words together in a rhyming but meaningful way. Your oratorial brilliance, laced with instant wit and humor, makes you one of the finest speakers we have witnessed in our parliamentary polity in the recent times. Sir, we are beholden to you for the deftly steering the functioning of the House during the unprecedented COVID pandemic. Your concerns in ensuring our personal health and safety during the difficult time while making the House functional will be remembered for times to come. Sir, your role as the chairman of Rajya Sabha has been indeed noteworthy as you have guided the House when the country is celebrating 75th year of our independence as Azadi Ka Amrit. We will treasure our memories of your tenure as chairman of Rajya Sabha. We will value your guidance and advice and strive to live up to the ideals, duties and responsibilities you have expected from us as public representatives and serve the nation and the people. We bid you farewell, wishing you the best of health and a joyful life ahead. We sincerely hope that you continue to guide and inspire the nation with your sagacious thoughts and ideas, sir. Sir, thank you very much. I once again request the Honorable Deputy Chairman, sir, to present the farewell address to the Honorable Vice President and the Chairman Rajya Sabha, Shri M. Venkaiah Naidu. बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी परंपरा रही है कि हम इस विदाई समारोह के अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति को एक स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं सीधे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया राज्यसभा के माननीय सभापति श्री वेंकैया नायडू को स्मृति चिन्ह भेंट करें। Sir, thank you very much for this wonderful and mesmerizing gesture. I once again request the Honorable Prime Minister, sir, to release the chronicle of Honorable Vice President of India and Chairman Rajya Sabha Shri M. Venkaiah Naidu from 2017 to 2022, entitled Interacting, Involving, Inspiring. माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि आज के इन ऐतिहासिक पलों को जीवंत और यादगार बनाने के लिए आप कृपया अपने उद्गार व्यक्त करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, मंचस्थ सभी वरिष्ठ महानुभाव, उपस्थित सभी गणमान्य सांसदगण, अन्य सभी महानुभाव, जितना मैं वेंकैया जी को जानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि विदाई संभव है। ग्यारह तारीख के बाद आप जरूर अनुभव करेंगे कि किसी न किसी काम से आप पर फोन आएगा, आपके विषय में कुछ जानकारी मिली होगी, सुख दुख की बात होगी तो तुरंत पूछेंगे। यानी एक प्रकार से वो हर पल सक्रिय रहते हैं, हर पल हर किसी के बीच होते हैं, और ये उनकी बड़ी विशेषता रही है। उनके जीवन की भी क्षमता को अगर हम देखें, मैं जब पार्टी संगठन का काम करता था और उस समय अटल जी की सरकार बनी, मंत्रिपरिषद की रचना हो रही थी, तो मैं संगठन का काम करता था, तो मेरा और वेंकैया जी के बीच संवाद जरा अधिक रहता था। उन्होंने मुझे कहा कि वैसे तो ये प्रधानमंत्री का ही अंतिम निर्णय होता है कि कौन मंत्री बनेगा, किस मंत्री को क्या काम मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा, और ये भी तय था कि साउथ में से वेंकैया जी जैसे वरिष्ठ नेता का मंत्री होना तय था। लेकिन वो चाहते थे कि बहुत बड़ा तामझाम वाला, जरा ग्लैमरस ऐसा कोई डिपार्टमेंट मुझे बचाइए। और बोले अगर प्रधानमंत्री जी को बुरा न लगे तो मेरी इच्छा है कि मेरे मन का काम अगर है वो है ग्रामीण विकास। अगर मुझे ग्रामीण विकास का काम मिले तो मैं करना चाहता हूं। यानी ये पैशन, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अटल जी को वेंकैया जी की और भी जरूरतें थी, लेकिन चूंकि उनका मन ये था तो अटल जी ने उस प्रकार से निर्णय भी किया और उस काम को बखूबी वेंकैया जी ने निभाया। अब और एक विशेषता देखिए, वेंकैया जी शायद एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय तो देखा ही देखा, शहरी विकास भी देखा। यानी एक प्रकार से विकास के जो प्रमुख दोनों पहलू कहें, उसमें उन्होंने अपनी महारत दिखाई। वे पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा के पहले सभापति थे, जो राज्यसभा के मेंबर रहे थे। बाकी ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला था, शायद अकेले वेंकैया जी को मिला। अब जो स्वयं लंबे समय तक राज्यसभा में रहे हो, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के रूप में कार्यभार देख चुके हो, इसका मतलब है कि उनको सदन में क्या क्या चलता है, पर्दे के पीछे क्या चलता है, कौन सा दल क्या करेगा, ट्रेजरी बैंक की तरफ से क्या होगा, सामने से क्या होगा, वो उठ करके उसके पास गया, मतलब ये खुराफत कुछ चल रही है, इन सारी बातों का उनको भलाई भांति अंदाज था। और इसलिए सभापति के रूप में
दोनों तरफ उनको पता रहता था कि आज ये करेंगे, और ये उनका जो अनुभव था वो ट्रेजरी बेंच के लिए उपयोगी होता था, तो विपक्ष के मित्रों के लिए परेशानी भी का कारण बनता था कि पता चल जाता था। लेकिन उन्होंने सदन को और अधिक सक्षम बनाना, सांसद का बेस्ट देश को कैसे मिले, ये उसकी चिंता। पार्लियामेंट्री कमिटीज अधिक प्रोडक्टिव हो, आउटकम ओरिएंटेड हो और वैल्यू एडिशन करने वाली हो। शायद वेंकैया जी पहले ऐसे सभापति रहे होंगे जिन्होंने पार्लियामेंट्री कमिटीज के फंक्शन के संबंध में भी इतनी चिंता की होगी और राजी नाराजी व्यक्त करते हुए उसमें सुधार लाने का एक निरंतर प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि आज जब हम वेंकैया जी के इन कार्यों की सराहना करते हैं तो साथ साथ हम संकल्प भी करें कि सभापति के रूप में एक सांसद के नाते हम लोगों से उनकी जो अपेक्षाएं रही हैं, उन अपेक्षाओं को परिपूर्ण करके सच्चे अर्थ में उनकी सलाह को हम जीवन में यादगार बनाएंगे तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी सेवा होगी। वेंकैया जी समय का सर्वाधिक उपयोग कैसे हो उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत यात्रा करना, स्थान स्थान पर खुद जाना, ये उनके पिछले 5 दशक की जिंदगी रही है। लेकिन जब कोरोना काल आया, हम लोग मजाक में एक बार बैठे थे तो बातें चल रही थी। मैंने कहा इस कोरोना के कारण और ये लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा मुसीबत किसको आएगी? मैंने अपने साथियों को पूछा था। सब लोगों को लगा कि मोदी जी ये क्या पूछ रहे हैं। मैंने कहा कल्पना कीजिए सबसे ज्यादा तकलीफ किसको आएगी? तो कोई जवाब मिला नहीं। मैंने कहा कि इस परिस्थिति की सबसे ज्यादा मुसीबत अगर किसी को आएगी तो वेंकैया नायडू को आएगी, क्योंकि वो इतने दौड़ धूप करने वाले व्यक्ति, उनके लिए एक जगह पे बैठना ये बहुत बड़ा पनिशमेंट का कालखंड था उनके लिए। लेकिन वे इनोवेटिव भी हैं और उसके कारण उन्होंने इस कोरोना कालखंड का एक बड़ा रचनात्मक उपयोग किया। उन्होंने, मैं शब्द प्रयोग करना चाहूंगा, वो विद्वान लोगों की नजर में ठीक होगा कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो टेली यात्रा करते थे। और टेली यात्रा उन्होंने क्या किया, सुबह टेलीफोन डायरी लेके बैठते थे और पिछले 50 साल में देश सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जिन जिन लोगों से उनका संबंध आया है उसमें जो वरिष्ठ लोग थे, डेली 30, 40, 50 लोगों को फोन करना, उनके हाल पूछना, कोरोना के कारण कोई तकलीफ तो नहीं है इसकी जानकारी प्राप्त करना और हो सके तो मदद करना। उन्होंने समय का इतना सदुपयोग किया था। लेकिन उन दूर सुदूर इलाकों में छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जब उनका टेलीफोन आता था तो वो तो ऊर्जा से भर जाता था। इतना ही नहीं, शायद ही कोई एमपी ऐसा होगा कि जिन्होंने कोरोना काल में वेंकैया जी की तरफ से फोन उनको ना आया हो, उनका खबर न पूछी हो, वैक्सीनेशन की चिंता न की हो। यानी एक प्रकार से परिवार के एक मुखिया की तरह उन्होंने सबको संभालना, सबकी चिंता करने का भी उनका प्रयास रहा। वेंकैया जी की एक विशेषता है, मैं जो कहता हूं ना कि वो कभी हमसे अलग हो ही नहीं सकते। और उसके मैं उदाहरण बताता हूं।
एक बार इलेक्शन कैंपेन के लिए वो बिहार गए हुए थे। अचानक उनका हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करना पड़ा, खेत में उतारना पड़ा। अब वो इलाका भी थोड़ा चिंताजनक था, थोड़े सिक्योरिटी के भी इश्यू खड़े हो जाए इस प्रकार का था। लेकिन नजदीक के किसान ने आकर के उनकी मदद की, वो मोटरसाइकिल पर उनको नजदीक के पुलिस थाने तक ले गया। अब भारत के सार्वजनिक जीवन के हिसाब से देखें तो वेंकैया जी बहुत बड़े व्यक्ति, लेकिन आज भी उस किसान परिवार से उनका जीवंत नाता है। यानी बिहार के दूर सुदूर ग्रामीण जीवन में एक घटना के समय किसी की मदद मिली, वो मोटरसाइकिल वाला किसान आज भी वेंकैया जी के साथ मेरी बात होती है, लगातार होती है। इस प्रकार का गर्व से बात करें, ये वेंकैया जी की विशेषता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि वे हमेशा हमारे बीच एक सक्रिय साथी के रूप में रहेंगे, मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे। उनका अनुभव हमारे लिए काम आता रहेगा। आने वाले उनका कार्यकाल अधिक अनुभव के साथ अब वेंकैया जी समाज की एक नई जिम्मेवारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तब ये बात सही है। आज सुबह जब वो कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे जब ये दायित्व आया तो मेरा एक पीड़ा का कारण ये था कि मुझे मेरी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस पार्टी के लिए मैंने जीवन खपा दिया उससे मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। उसका मुझे वो संवैधानिक आवश्यकता थी। तो लेकिन मुझे लगता है कि वो 5 साल की जो कमी है वेंकैया जी जरूर भरपाई कर देंगे। जरूर उन पुराने सारे साथियों को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, पुरस्कृत करने का उनका काम निरंतर जारी रहेगा। मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से वेंकैया जी का जीवन हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अमानत है, बहुत बड़ी विरासत है। उनके साथ जो कुछ भी हमने सीखा है उसको हम आगे बढ़ाएं। भाषा के प्रति उनकी जो उनका लगाव है और उन्होंने मातृभाषा को जिस प्रकार से प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है उसको आगे बढ़ाने के और भी प्रयास हुए। मैं आप में से शायद लोगों को अगर रुचि हो तो मैं आग्रह करूंगा, भाषिणी एक वेबसाइट भारत सरकार ने लॉन्च की हुई है। इस भाषिणी में हम भारतीय भाषाओं को, उसकी समृद्धि को और हमारी अपनी ही भाषाओं को एक भाषा में से दूसरी भाषा में अगर इंटरप्रिटेशन करना है, ट्रांसलेशन करना है तो उसमें सारी व्यवस्था है। ये बहुत ही अच्छा टूल बना हुआ है जो हम लोगों को काफी काम आ सकता है। लेकिन उसमें से मुझे एक और विचार आया है। मैं चाहूंगा कि स्पीकर महोदय भी और हरिवंश जी भी, हरिवंश जी तो उसी दुनिया के व्यक्ति हैं, शब्द के साधक हैं, जरूर उस दिशा में काम हो सकता है। दुनिया में डिक्शनरी में नए शब्द जोड़ने की परंपरा रहती है और ऑफिशियली अनाउंस भी होता है। एक बड़ा उसका महात्मा होता है कि वे फलाने देश की फलानी भाषा का फलाना वर्ड अब अंग्रेजी की उस डिक्शनरी में अब स्थान प्राप्त कर रहा है, उसका गौरव भी होता है। जैसे हमारा गुरु शब्द है, वो आज अंग्रेजी डिक्शनरी में उसका हिस्सा बन चुका है। वो ऐसे कई शब्द होते हैं। हमारे यहाँ जो मातृभाषा में भाषण हो पार्लियामेंट में, दोनों सदन, उसमें कई लोगों के पास से बहुत बढ़िया शब्द निकलते हैं और भाषा के लोगों के लिए वो शब्द बड़ा सार्थक भी लगता है और बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। क्या हमारे दोनों सदन हर साल इस प्रकार के नए शब्द कौन से आ रहे हैं जो सचमुच में हमारी भाषा वैविध्य को लेकर के आते हैं, नए तरीके से आते हैं, उसका संग्रह करते चले और हर वर्ष एक बार अच्छे शब्दों का संग्रह भी हम प्रकट करने की परंपरा खड़ी करें, ताकि हमारी मातृभाषा का जो वेंकैया जी का एक लगाव रहा है, उनकी इस लीगेसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और जब भी हम इस काम को करेंगे,
हमें हमेशा वेंकैया जी की बातें याद आएगी और एक जीवंत काम हम खड़ा कर देंगे। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वेंकैया जी को, उनके पूरे परिवार को अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री का उनके संबोधन और उद्गारों को व्यक्त करने के लिए धन्यवाद करता हूं। माननीय श्री वेंकैया नायडू 5 वर्ष तक भारत के दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन रहे। माननीय श्री वेंकैया नायडू ने देश विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व किया। राज्यसभा के सभापति के रूप में आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य किए और अपनी संस्कृति का पालन करते हुए नई परंपराओं की नींव रखी। इस अवधि के दौरान क्या क्या अनुभव रहे, इसकी अभिव्यक्ति स्वयं माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू स्वयं कर सकते हैं। अब मैं सीधे आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु माननीय सभापति श्री वेंकैया नायडू से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस अवसर पर अपने विचार रखें। Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, Honorable Speaker Sri Om Birla ji, Honorable Leader of the Opposition, one of the senior politicians of the country, Sri Mallikarjuna Kharge ji, Honorable Deputy Chairman Harivansh ji, Honorable Leader of the House Piyush Goyal ji, Honorable Minister for Parliament Affairs Sri Prahlad Joshi ji, Honorable Ministers, leaders of different political parties of both the Lok Sabha and Rajya Sabha. I would like to first thank the Deputy Chairman of the Rajya Sabha for taking this initiative, and also would like to thank the Speaker of the Lok Sabha, because both of them, they have invited members from both sides of the house and provided me an opportunity to meet, to greet, talk to you all people. I am also thankful to the Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji for his kind, appreciative words of love and affection he has shown towards me and also the leader of the opposition in the upper house in extending cooperation to me for my performance, and also leaders of different political parties and all the ministers. I am very happy on one side. On the other side, I feel I will be missing you all, because I will not be in this position of chairing the house from 10th onwards. These 5 years of these twin responsibilities, on one side, the prestigious Vice President of India, second highest constitutional authority, and other side, presiding over the upper house of the Indian Parliament. It's a privilege given to me by the party, by the Prime Minister, and also the affection and support given by other parties in fulfilling my responsibilities and carrying forward the mandate that is given to me. Friends, I don't want, the other day when I said, friends, someone in the Rajya Sabha said, sir, this is the house, honorable members.
And I always address people. Deviyo Sajjano, Naidu, brothers and sisters. Because I never used to use the word ladies and gentlemen. And I always used to greet the people with the simple Indianness of Namaste. सुबह नमस्ते, दोपहर में नमस्ते, शाम को नमस्ते, रात को भी नमस्ते, एक ही वाक्य. If you say good morning, then you have to say good afternoon, then you have to say good evening, then you have to say good night. You don't know whether it's going to be good night or other night. Simple. Our Indian tradition, our culture has so much in it, and I love that culture. I'm not talking of religion. Religion is personal, the way of worship. But culture, the Indian way of living, the love and affection, the family system, and respecting each other, give and take approach, and then share and care is the core of Indian philosophy. Share and care is the core of Indian philosophy. And loving the nature. Love the nature and nature will love you. Nature, culture for better future together. That should be our motto. We should all follow it in our life, in our respective ways. Vasudhaiva Kutumbakam. That is the philosophy. The entire universe is one family. Friends, India once upon a time was known as Vishwaguru. I don't want to get into details, you are all aware of it. And we were the richest nation at that time. Richest. It may be news for many of us also because we are taught the colonial history, suppressing the facts about the greatness of this culture, this heritage, and this civilization. We are the oldest civilization. There are, of course, Egypt, Babylonian, Roman, but where are they today? And India is once again is on the rise. India is being recognized, respected, appreciated worldwide, thanks to the Prime Ministers that three lines: reform, perform and transform. Transformation that is taking place in every walk of life, in every sector, is being watched. The world, some people are not able to digest our growth. Some of the Western countries, they don't have that capacity to digest. They are suffering from indigestion. That's what I say. Otherwise, the talent of Indian people is on the display everywhere in the world. And also, the advancement we have made and the infrastructure we have created are so great that we can move forward. Of course, I do agree that there are few challenges. Everybody should remember those challenges and give priority to face those challenges. One, still 20% below, or 18%, 15%, whatever you may say, poverty. And then around same percentage, illiteracy, who cannot write and read. And third is gender discrimination here and there. In certain areas, not all. There is a lot of improvement, of course. Women are coming forward. We are seeing their performance also. They are proving they are second to none. And then also social discrimination here and there. You read the stories even today. So these are the challenges we have in front of us. We have to face those challenges and we should all work together. The center, state, local bodies, the ruling party, opposition parties, they all should come together to address these challenges. That should be our priority. That's why I always say nation first, party next, self last. Some people are trying to reverse it. It's a different matter. I don't want to get into that. The nation, nationalism, patriotism, देशभक्ति माने क्या है? देश माने हमारा गुरजाड़ अप्पाराव जी ने कहा, great Telugu poet, legendary. He said, देशम అంటే మట్టి కాదోయ్, దేశం అంటే మనుషులోయ్.
Country means not the soil alone. Country means people. So their welfare, that should be topmost in our mind. If you take care of those people, then you are a real Deshabhakta. And you should not practice any of the divisive things, irrespective of caste, creed, sex, religion and region. We are Indians. हम सब भारतीय है, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश. ये हमारा विशेषता. इसको कायम रखना हमारा कर्तव्य होना चाहिए. In a democracy, we must have tolerance. Tolerance. Tolerance towards the other point of view. Tolerance towards the mandate of the people. People give mandate. What can you do? If you are not happy with the mandate, go to the people again, mobilize. And then try for a change after waiting. This is possible in India. You have seen how many changes have come. You must have patience. If you don't have patience, you will become a patient. This has to be understood. You have to have patience. And the government, in spite of having majority, should also give respect for the opposition to have their say. Let the opposition have its say. And finally, the government will have its way because they have majority. But the opposition say must also be allowed to be heard. This is my advice. I come from a very ordinary farmer's family, Kisan family. I feel proud of my background. There was no school in my village. 3 kilometers I used to walk, go to school. Unfortunately, I lost my mother very young age. I could not even recollect her face. That is the great misfortune for me. Otherwise, everything that I wanted, not wanted, expected, aspired, not aspired, everything has come to me. School people, leader, college president, union president, first I was vice president, then president, university students, union chairman, then youth wing president, All India vice president, state party general secretary, All India general secretary, state party president, All India president, then MLA at Engage, and then leader of the party at Engage, though there were seniors. I always recall that I used to announce about arrival of Sri Atal Bihari Vajpayee ji to my town. आज शाम को कोपट मैदान में आम सभा है. श्रीमान अटल तरुण हृदय सम्राट हम लोग कहते थे उस समय. श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारा शहर में पधार रहे. आप सब लोग आके सबको सफल कराए. ऐसा झटका में बैठ के टांगा में अनाउंस करते थे और रात में दीवार के ऊपर लिखते थे. स्टूडेंट बीइंग प्रेसिडेंट ऑल्सो and spend time. But I never visualized that one day that same Venkaiah who pasted the posters, who wrote on the walls, who announced about the arrival of great leaders, would become president of the ruling party and sit beside Sriman Atal Bihari Vajpayee and Advani, both sides, being a ruling party president. That is the beauty of this democracy. But you must have conviction. You must be, as I told you, have patience. You must work hard. There is no shortcut. Work hard and always think about the people and always be with the people. I have that strength and weakness also. I can't, as PM was mentioning, I can't sit idle. If I am taking rest, I will become restive. Rest only during arrest. Otherwise, if I feel if there is any rest is given to me, I will become a little restive also. This is how I could come up in life, meeting people, greeting people, talking with people, walking with the people, eating with the people, trying to know the people and trying to make people to know your ideas. That's how I worked all these years and reached this thing. Thanks to the support given by Prime Minister, the President of the party in which I was a member, and all other colleagues. In spite of comparatively for some of the leaders I was junior, they all promoted me, encouraged me. Not because of anything else. I can tell you also, I never touched the feet of anybody. So far in my life, though I treat Vajpayee and Advani ji next to God for me.
Never. Still, they could come up to this place. One is their love and affection. Second is the hard work. I appeal to all the parliamentarians to work hard, go around, try to acquire knowledge. I was really restive, as Narendra Bhai was telling, during that COVID period. There was only one person who was happy. That was my wife. He said, for a change, he is there at home at least for such a long period, because I never stayed. Even after my marriage also, I used to go around. COVID, there was lockdown, so you could not go. So I used to feel it is restive, but try to communicate with the people in whatever possible means. So communication in public life is very important. Reaching out to the people, conveying the thoughts in whatever manner you should do it. Pradhan Mantri, Man Ki Baat ho, or opposition leaders, their tours or yatras, whatever it is, or through articles, sharing your ideas and caring for the people, conveying them. I would like to tell you also the secret. Though I have given up politics, I always used to communicate with the Prime Minister and convey whatever feedback I got. I used to convey it to him and leave it there. Because as Vice President, I cannot do anything more. As a minister, as a party functionary, of course, we used to discuss, debate, and I used to be part of the decision making. But here, because of constitutionality and the protocol, you have so many protocols here. I don't want to run down the protocol, but it's more hotter than a charcoal. Try to understand this. This is one which I could not like and relish, but has its own. When you become country's number two, a certain amount of these things are required. This is what my officers and other seniors have told me. Friends, we are going through a situation where we are just able to come out of Corona. And again, the momentum is picking up. We must be participants in that momentum, contribution, and see to it that the other challenges are met by all of us. For that, parliamentarians should be regular. Another lesson I have learned, regular in attending parliament. Or if you are in party meetings, attend to while others are speaking. Learn. I have learned by hearing many of these people, leaders, and then utilizing the library to the maximum possible extent to know, to read the debates of the Constituent Assembly. What those great men have said at that time. What are the thoughts of Rajgopalachari? What are the teachings of Sardar Patel, Jawaharlal Nehru, many stalwarts? Those days, what did Nadpai, Vajpayee said, Masani or Acharya Ranga said, or Prakash Veer Shastri has said, or Bhupesh Gupta, or Indrajit Gupta, or Jyotirmai Basu. What are the speeches they made? You go through that. You may not agree on everything, but you will understand. You will understand them better. And by understanding them better, you are making yourself better understood by others also. This is one lesson I have learned, which has helped me to grow in my responsibility. So I call upon all the members of Parliament, because we are having a farewell on behalf of the Rajya Sabha and Lok Sabha together. I am focusing more on the responsibility, duties and functions of the parliamentarians. We are celebrating 75th year of our independence. This is the time. Tomorrow we are going to have Quit India. We have successfully driven them out under the leadership of great stalwarts. But now we should recall the life and teachings and preachings of those great people. One thing I am happy about the approach of the government of giving Padma Awards. Recognizing the unrecognized. That is the need of the hour. To showcase them before the country.
They are the real heroes and heroines. There are many, not the few, that found place in textbooks. Many, thousands in every region. Great people. I'm happy certain newspapers are giving life stories of these so-called regional heroes. They are not regional, they are national. But they were confined to those states. There are great heroes who made sacrifice from different states across the country, different regions, including the Northeast. Northeast. So those legendary great leaders' lives should be recalled. We should tell our younger generation, and we should see to it that they know of the teachings and preachings of these great people, and then so that they can follow it in their life. This is, I thought I should convey it to you. This, we should move on, move forward. We should be positive. Only thing good about, the bad about positive is only Corona. Corona positive means that's different. But positive momentum, positive thought, positive thinking, positive way of putting things is the need of the hour. We should feel proud. We should never utter any word or say anything which will undermine India's credibility in the Committee of Nations. As I told you already, certain section of the Western press, they want to run us down. They don't give importance to what is happening. And they try to give us lessons, preach us lessons about, I don't want to get into the details of how apartheid, how untouchability, how racism, how sex discrimination on the basis of so many things are happening, and how the countries are ruled with their own religious books in their hands. We are proud that appeasement of none, justice for all, that is the philosophy of India. All religions, they must get importance, they must get respect. That is the philosophy of our Indian life. So let us all follow it and then see to it that this during the Azadi Ka Amrita Mahotsav, we all meet people and convey them, and the great works have done by those people. And finally, I conclude, the houses should function on the 3D formula: dignity, decency, decorum, debate, discussion, then decision. The other fourth D should not be used. That is disruption. Once in a way, it's quite natural to people to get agitated, protest, but protest it in a more dignified way. Protest through your voice, because noise is not going to help also. Voice is more important. And then talk out and walk out. Don't allow breakout, because it will lead to all out of democracy. This has to be kept in mind by all of us. And then, friends, I see a lot of talent in youngsters in Lok Sabha, in Rajya Sabha. For information, whenever I like a speech, I telephone even Lok Sabha members also now. Whenever I get an occasion to hear their speeches. And I always feel that youngsters, they should be encouraged. They should be given importance, because they are the future of our country. So let us all be proud of our culture, of our youngsters and their talent, and give them the necessary encouragement. Once again, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरा हृदय से, विनम्रता से। और जो अभी सम्मान पत्र मुझे प्रेजेंट किया, that is very valuable for me. I cherish these memories throughout my life and remember you, and will continue to meet, greet. Even after demitting my office, I'll be going around and trying to meet as many people as possible and greet them also as possible. And then now, from day of tomorrow, 15th August, we are getting again Independence Day. But 11th is my Independence Day from this protocol.
I'll be free. I'll be free to go meet people, stop anywhere, suddenly go to anybody's house, eat food of my choice, share my thoughts freely and mingle with the general people. Dhanyavad, Namaskar, Jai Hind. सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शब्द और पल हमेशा हमारे दिलों में जीवंत रहेंगे। इस विदाई समारोह के समापन की घड़ी आ गई है, किंतु उससे पहले राष्ट्र के प्रति प्रेम और देश प्रेम की भावना के साथ अब वक्त हो गया है राष्ट्रगान का। आप सभी का शुक्रिया। अंत में मैं संपूर्ण राज्यसभा सचिवालय और अपनी ओर से माननीय सभापति को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य माननीयों, अतिथियों और सभी अधिकारियों का आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भोजन की व्यवस्था पार्लियामेंट लाइब्रेरी बैंक्वेट हॉल फर्स्ट फ्लोर में की गई है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया भोजन के लिए पधारें। जय हिंद। जी, जाहिर सी बात है कि वेंकैया नायडू जी के सम्मान में संसद भवन परिसर स्थित बाल योगी सभागार में जो भव्य कार्यक्रम हुआ, इसका अपना एक संदेश है, लोकतंत्र के लिहाज से संदेश है और लोकतंत्र में कैसे एक दूसरे के साथ संवाद, सबको साथ लेके चलना है, उसके लिए एक संदेश है। दरअसल वेंकैया नायडू जी का जो कार्यकाल रहा, उसने संसदीय मूल्य और परंपराओं को एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। केवी प्रसाद जी, आप कैसे देखते हैं? जो संबोधन उनका आज का था वो भी बहुत प्रेरणादायक था। जी, बहुत अच्छा था और खासकर उन्होंने एक अपने लंबे कार्यकाल में जो राजनीतिक जीवन से शुरू करके जो अब तक उनका जो सफर रहा है उसका निचोड़ दिया और कहा कि कैसे आचरण होना चाहिए लोगों का, खासकर जो पब्लिक लाइफ में आते हैं, और किस तरह से इसमें जिम्मेदार पद पे जब बैठे हुए थे तो उनके मन में किस तरह के विचार थे और वो कैसे चाहते थे कि सदन की कार्रवाई चलती रहे सुचारू रूप से। और जैसे उन्होंने बात कही कि भाई देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपने बात रखना चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, क्योंकि शुरू से संसदीय कार्य में एक बात जो कही जाती है वो ये है कि सदन दोनों के सहमति से ही चलता है। तो एक पक्ष अगर दूसरे पक्ष को सुने, और उन्होंने एक और बात कही कि टॉलरेंस टू अदर्स व्यूज, मतलब जो दूसरी बात रख रहे हैं उनकी बात सुनिए आप, उसको सहन करने की शक्ति करिए। तो ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि अच्छे विचार है। और ऐसे वक्त जब वो अपना पद छोड़ के जा रहे हैं तो एक सीनियर के नाते उन्होंने एक संदेश दिया सब आज के वर्तमान सांसदों को भी और आने वाले पीढ़ियों को भी। जी, बिल्कुल प्रसाद जी, एक बात उन्होंने और कही कि सदन में चर्चा हो, संवाद हो, व्यवधान ना हो। जी, और उनके जो वन लाइनर्स रहे वो भी कहीं ना कहीं एक राह दिखाने का काम करते हैं। वो देखिए, खासकर वो संक्षिप्त में
वो बात कह जाते थे जो आपको याद रह जाए और जिससे कि कार्य करने में भी आसानी रहे और लोगों को वो सही रास्ता दिखाए। और क्योंकि संसद जो जगह है वहीं पे ये संवाद हो सकता है और संवाद इन्हीं दोनों अलग अलग तमाम सारी विचारों का आदान प्रदान होता है। और हमेशा यही रहा है कि विभिन्न विचारों के बीच एक आम रास्ता ढूंढा जाता है और उसे आम राय जब बनती है तब आगे का रास्ता निकलता है और यही परंपरा रही है। और इसी परंपरा को देखा उन्होंने बहुत नज़दीकी से, क्योंकि उन्होंने अपना कार्यकाल गिनवाते हुए कहा कि वो अद्वानी जी और वाजपेयी जी जैसे कद्दावर नेताओं के साथ जुड़े रहे और पार्टी के साथ अलग अलग काम भी किए। तो ऐसे में वो संसद में आए और कैसे उन्होंने कार्य किया अलग अलग पदों पे। अंततः जब वो उपराष्ट्रपति और सदन के अध्यक्ष के रूप में काम करके कार्यकाल पूरा कर रहे हैं तो वो अपना निचोड़ दे गए हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी के.वी. प्रसाद जी, अगर बात संसदीय व्यवस्था की जाए तो खास तौर से अगर कमेटियों की बात करूं, संसदीय समितियों की बात करूं तो सभापति के तौर पे वेंकैया नायडू जी का जोर खासा। संसदीय समितियां कैसे और गतिशील हों, कैसे और सक्रिय हों और उनका जो चर्चा होती है उसका आउटकम कैसे सामने आए, उस पर भी खासा जोर दिया। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 1992-93 में पहली बारी संसद की अलग कमेटियां, स्थायी कमेटियां बनाई गई थी उस वक्त, और उसका सुचारू रूप से ताकि कार्य हो। और संसदीय कमेटी में जैसे आप भी ज्ञात हैं बहुत ज्यादा काम होता है और वैसा काम होता है जहां पे लोग दल से उठ के, दलगत राजनीति से हटकर एक विचार करते हैं और अपना विवेक का इस्तेमाल करके ये बताते हैं कि कौन सा जो भी कानून बनने वाला है उस पर किस तरह से विचार किया जाए, अलग अलग लोगों से राय लेके। ऐसे में वेंकैया नायडू जी ने ये पाया कि इस पे कोई क्वांटिफाई नहीं हुआ, कभी भी इस पे कोई ऐसा हिसाब नहीं लगाया गया कि ये कार्य हो रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, कितने कमेटी मीटिंग्स होती हैं, लोग जाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, इससे संसद के आगे पेश होता है, लेकिन उसकी कार्य पद्धति पे खास नजर रखवाई। उससे ये हुआ कि ज्यादा लोगों की उसमें भागीदारी बढ़ी और साथ ही साथ जैसे आपने कहा आउटकम कि बाहर निकल के क्या आ रहा है ये पूरे प्रक्रिया से। क्योंकि पिछले कुछ सालों से विपक्ष की तरफ से खासकर ये कहा जा रहा था कि बिल्स ज़्यादा रेफर नहीं हो रही कमेटी को, जो एक प्रावधान है, क्योंकि कानून बनाने के लिए लंबी सोच जो उसके पीछे चाहिए। तो ऐसे में इन्होंने देखा भी अगर जो बिल जा रहे हैं उस पर कितना काम हो रहा है और तमाम सारी जो मुद्दे जो संसद के अलग दोनों सदन रेफर करते हैं कमेटीज को, उस पर कौन सा गहन विचार हो रहा है, उस पर कितने लोग भागीदारी कर रहे हैं जी, तो उस पर नजर रखाई। तो अब जब सांसद को लगेगा कि चेयरमैन की खुद नजर है तो एक अलग किस्म की जिम्मेदारी निकल के आती है। जाहिर तौर पे के.वी. प्रसाद साहब उपराष्ट्रपति के रूप में, सभापति के तौर पे वेंकैया नायडू का जो कार्यकाल रहा है उसमें उनके द्वारा जो व्यवस्था दी गई सदन के संदर्भ में वो अपने में एक प्रेरणादायी है, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली है। और जो आपसी संवाद है संसद सदस्यों के बीच, लोकतंत्र में जो संवाद और चर्चा का स्थान होना चाहिए, उस पर उनका जो खास जोर रहा वो वास्तव में संसदीय मूल्यों और परंपराओं को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला है। के.वी. प्रसाद जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। देखिए, आज़ादी की अमृत महोत्सव पूरा भारतवर्ष मना रहा है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि घर घर तिरंगा झंडा फहराना है और हम सबको आज़ादी की अमृत महोत्सव में 75वें साल के उपलक्ष्य में हम सबको घर घर तिरंगा भी फहराना है और बड़ा उत्साह के साथ पूरा देश में तिरंगा फहराना है। इस बार हम सब ने ठान लिया है कि हर घर तिरंगा फहरेगा और देश में पूरा तिरंगा झंडा बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग मनाएंगे। इतना जरूर कहना चाहूंगी, हर घर तिरंगा, यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस देश में और आज़ादी को 75वां वर्ष हम मना रहे हैं। तो
13 से 15 तक अपने हर घर के सामने, घर के छतों पे हमने तिरंगा लगाना चाहिए और स्वाभिमान, अभिमान हमें है इस देश के ऊपर, वो सभी ने, ये पूरे देशवासियों को दिखाना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस करके इतना प्राउड मोमेंट ये देश को दिया है, मुझे लगता है आपको भी उतना ही प्राउड है और मुझे भी। मेरे घर भी तिरंगा होगा, क्या आपके घर में होगा? Parliament in session. Day's legislative business. Debates and discussions. Catch the high points. All the updates on Pulse Highlights. Monday to Friday at 10 p.m. only on Sunset TV.